Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Diriye Nashtiprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhavati Naishtike. So continuing with the discussion on Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 7, what Prahlad learned in the womb. Text number 43 on. Kaman kamyate kamyer yadartham ih purusha savai dehastu parakyo bhanguro yati upati cha. A living entity desires comfort for his body and makes many plans for this purpose. But actually the body is the property of others. Indeed, the perishable body embraces the living entity and then leaves him aside. Now, everyone desires comfort for his body and tries to make a suitable situation for this purpose, forgetting that the body is meant to be eaten by dogs, jackals, or moths, and thus turned into useless stool, ashes, or earth. The living entity wastes his time in a futile attempt to gain material possessions for the comfort of one body after another. And this is the life history of everyone, all of us. Instead of working on self-realization, spiritual advancement, we try to gain more and more and more and more, thinking this is it, this is life, this is what I have to do. This is the goal of life. We're not understanding this body we're going to leave. Even this body is not ours. What to speak of all the possessions. Kim uvyavahita patya dara gara dhanadaya rajya kosha gajamatya bhrityapta mamtaspadaha. Since the body itself is ultimately meant to become stool or earth, what is meaning of the paraphernalia related to the body, such as wives, residences, wealth, children, relatives, servants, friends, kingdoms, treasuries, animals, and ministers? They're also temporary. What more can be said about this? Kimateratmumanastuchhe Sahadevehen Nashvare Anarthar Artha Sankashar Nityananda Rasodadhe. All this paraphernalia is very near and dear as long as the body exists. But as soon as the body is destroyed, all things related to the body are also finished. Therefore, actually, one has nothing to do with them, but because of ignorance, one accepts them as valuable. Compared to the ocean of eternal happiness, they are most insignificant. What is the use of such insignificant relationships for the eternal living being? So that definitely can bring lots of detachment in a living entity's heart. Krishna consciousness, devotional service to Krishna, is the ocean of eternal bliss. In comparison to this eternal bliss, the so-called happiness of society, friendship, and love is simply useless and insignificant. One should therefore not be attached to temporary things. One should take to Krishna consciousness and become eternally happy. So that is the goal, but we become so much engrossed and involved in temporary things that we forget the real goal, the permanent. Nirupyatam ihi swartha kiyan dehe brito asuraha nishekadishvavasthasu kleshya manasya karmabhi. My dear friends, O sons of the Asuras, the living entity receives different types of bodies according to his previous
fruitive activities. Thus, he is seen to suffer with reference to his particular body in all conditions of life, beginning with his infusion into the womb. Please tell me, therefore, after full consideration, what is the living entity's actual interest in fruitive activities, which result in hardship and misery? What's the relation, living entities' actual interest in fruitive activities, which only result in hardship and misery? So why we keep on doing these activities? The living entity receives a particular type of body according to his karma or fruitive activities. The material pleasure derived in the material world from one's particular body is based on sexual pleasure. The entire world is working so hard only for sexual pleasure. To enjoy sexual pleasure and maintain the status quo of material life, one must work very hard. And because of such activities, one prepares himself another material body. Prahlad Maharaj places this matter to his friends and the Asuras for their consideration. Asuras generally cannot understand that the objects of sexual pleasure, the so-called pleasure of materialistic life, depends on extremely hard labor. So this is all. The purpose is for the materialistic people to enjoy sexual pleasure and maintain the status quo of material life, or not just maintain, even to make progress, because to maintain is not the goal. We have to make progress. We have to keep on moving forward, attain more and more, get more and more money and properties and whatever. And what it requires, one must work very hard. And then what? One prepares himself for another material body. And this, when one works very hard, definitely he commits many sinful activities. And of course, sometimes he does pious activities as well. So he gets another body to again go through the reactions of those sinful and pious activities. But is that it? Is this the goal of life? This is a proper. Asuras generally cannot understand. They just cannot. And this is what Krishna has explained nicely in the Bhagavad Gita, 16th chapter. Demoniac and divine qualities. And the people with demoniac tendencies, more demoniac tendencies, they just cannot understand what's the goal of life. They think this is all in all. Eat, drink, and be merry. Just get money whatever way you can get and enjoy this life. Enjoy this body which is going to be turned into ashes or stool. Karmani arabhate dehi dehe natma anuvartina karma bhistanute deham ubhyam tvavivekataha. The living entity who has received his present body because of his past fruitive activity may end the results of his actions in this life. But this does not mean that he is liberated from bondage to material bodies. The living entity receives one type of body, and by performing actions with that body, he creates another. Thus, he transmigrates from one body to another through repeated birth and death because of his gross ignorance. The living entity who has received his present body because of past fruitive activities may end the results of his actions in this life. But that doesn't mean he's liberated, because there's so many reactions from other lives. The living entity's evolution through different types of bodies is conducted automatically by the laws of nature in bodies other than those of human beings. In other words, by the laws of nature, the living entity evolves from lower grades of life to the human form. Because of his developed consciousness, however, the human being must understand the constitutional position of the living entity and understand
why he must accept a material body. This chance is given to him by nature. But if he nonetheless acts like an animal, what is the benefit of his human life? In this life, one must select the goal of life and act accordingly. Having received instructions from the spiritual master and the Shastra, one must be sufficiently intelligent. In the human form of life, one should not remain foolish and ignorant, but must inquire about his constitutional position. This is called a Thatu Brahma Jigyasa. The human psychology gives rise to many questions which various philosophers have considered and answered with various types of philosophy based upon mental concoction. This is not the way of liberation. The Vedic instruction says, Tad Vijnanartham Sagurum Evabhigachet. To solve the problems of life, one must accept a spiritual master. If one is actually serious in inquiring about the solution to material existence, one must approach a bona fide guru. So this human form of life we have received is only for one purpose. And that's what Prabhupada says, or this is what the Vedanta Sutra says, Athatu Brahma Jigyasa. At means somehow, now we have received this human form of life. And then what? To do what? Not body jigyasa, not where is money jigyasa, or where is sex jigyasa, where is food jigyasa. No, Brahma jigyasa. Jigyasa means to inquire. Brahm means to inquire about the spirituality, about the supreme soul, or about Parabrahma, Bhagwan, Krishna. So that is the goal of human life. But how many people are even interested in listening about this? And that's why one cannot just learn it by going to anybody or everybody. Just like if we want to do engineering course, then we go to a particular college or university which is authorized by the government and study the courses taught by the teachers who are again authorized by the government. And then we learn engineering. Then we become an engineer. And even after learning, after passing all the exams, then we have to get trained under some licensed engineers, experienced engineers. We cannot just go to any rickshaw puller or a sabriwala to tell them, teach me engineering. It won't happen. It won't work like that. So similarly, spiritual science, spiritual knowledge, we cannot just go to anybody and everybody. And because of this spiritual knowledge, spiritual science, people have different ideas. Everybody has different ideas. And this was in 1960s when Prabhupada came here to America. The hippies would take drugs, different kinds of drugs, and that would just make them intoxicated, and they would even forget where they are. And for hours and hours, they would be like that, like zombies. And they would think this is spiritual experience. And this is how they were selling it to each other. Get high, get high. This is not high. Getting drugs, chemicals don't make us high. They just suppress every feeling that we have, and we think, oh, I'm flying in the air. This is spirituality, and this is not spirituality. And that's what Prabhupada again and again brings us back to the scriptures, what the scriptures talk about. He says in Bhagavad Gita, it says, just try to learn the truth by approaching the spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him.
The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. One must approach a bona fide spiritual master by surrendering himself and rendering service. An intelligent person must inquire from the spiritual master about the goal of life. A bona fide spiritual master can answer all such questions because he has seen the real truth. So that is a bona fide spiritual master who has seen the real truth. Seen the real truth, not just theoretically studied about it. Because Prabhupada has given us so many descriptions, wonderful explanations of everything about Krishna. That's why learning from Prabhupada through Prabhupada's books is the best way possible. Even in ordinary activities, we must first consider gain and loss and then we act. Similarly, an intelligent person must consider the entire process of material existence and then act intelligently, following the directions of the bona fide spiritual master. So that way, if we follow the instructions of Prabhupada, then definitely he has seen the truth and he can reveal that truth to us also. Or by his mercy, Krishna can reveal the truth himself to us. Tasmad arthascha kamascha dharmascha yadapashreya bhajata nihya yatmanam aniham harim ishwaram. The four principles of advancement in spiritual life, dharma, artha, kam, and moksha, all depend on the disposition of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, my dear friends, follow in the footsteps of devotees. Without desire, fully depend upon the disposition of the Supreme Lord and worship Him, the Super Soul, in devotional service. These are words of intelligence. Everyone should know that in every stage of life, we are dependent upon the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the Dharma, religion, which we accept should be that which is recommended by Prahlad Maharaj or Bhagavad Dharma or the Mahajans or the authorities. This is the instructions of Krishna. So these are the instructions of Krishna. Sarva dharman pratyajya. To take shelter of the lotus feet of Krishna means to act according to the rules and regulations of Bhagavad Dharma, devotion service. As far as economic development is concerned, we should discharge our occupational duties, but fully depend on the lotus feet of the Lord for the results. Karmani vadhikaraste. You have a right to perform a prescribed duty, but you're not entitled to the fruits of action. According to one's position, one should perform his duties, but for the results, one should fully depend upon Krishna. Narottam Das Thakur thinks that our only desire should be to perform the duties of Krishna consciousness. We should not be misled by the karma mimamsa philosophy, which concludes that if we work seriously, the results will come automatically. That is not a fact. The ultimate result depends upon the will of the Supreme Personality of Godhead. In devotional service, therefore, the devotee completely depends upon the Lord and honestly performs his occupational duties. Therefore, Prahlad Maharaj advised his friends to depend completely on Krishna and worship him in devotional service. So as a devotee, we should understand everything is dependent upon the Lord. In our life, we should be completely dependent upon the Lord. We have to perform our duties, that's what Krishna says, but you're not entitled to the fruits of action.
Means we don't know what fruits we are going to get, when, how, where. We don't know. How much? We don't know. So karma mimamsa philosophy, which Prabhupada refers to here, is basically it says you do your work and you will get the results. The results depend upon your work. Yet they depend upon the work, but the results depend also on the will of the Supreme Personality of God. It's not like he's going to do any injustice to us, but how much he's going to give, when, where, that depends upon him. Because that also depends on way too many factors. Too many factors such as our previous karmas, what reaction is coming, when, where, and there's nothing we can do about it actually. Just like every student of engineering in India, they prepare for IIT to get the entrance in IIT, but not everybody gets the entrance. Everybody works hard, very, very hard, but not everybody gets entrance. So who gets the results? And some people, yes, some people are very intelligent, some boys, some students are very intelligent. Some are not, but some students work very hard. So which factor works where? We don't know. We don't know. So all we have to do is just do our activities and have the result of life, and the results, we have to leave it up to God. And in that process, if we are dependent upon Him, instead of becoming frustrated, instead of becoming depressed that why I am not getting the results, we should just have full faith in the Lord. He will give me whenever He wants. I just have to put in my best effort. Or in the case of this coronavirus pandemic, doctors are working hard, all the medical staff is working hard to revive patients. Many times every patient is getting the same medicine, same treatment, but some patients die, some patients revive. Who decides? Even the doctors, they don't decide. Even the doctors, they cannot guarantee that, yes, this patient is going to revive. No way. So ultimately, it all depends upon Him. Everything, all over the universe, depends upon Him. Sarveshamapi bhutanam hariratmeshwarah priya bhuter mahadbhi swakritah kritanam jiva sangitah. The Supreme Personality of Godhead, Hari, is the soul and the super soul of all living entities. Every living entity is a manifestation of His energy in terms of the living soul and the material body. Therefore, the Lord is the most dear and He is the supreme controller. The Supreme Personality of Godhead is manifested by His different energies, the material energy, the spiritual energy, and the marginal energy. He is the original source of all living entities in the material world, and He is situated in everyone's heart as a super soul. Although the living entity is a cause of His various types of bodies, the body is given by material nature according to the order of the Lord. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjun, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of material energy. The body is just like a machine, a car, in which the living entity is given a chance to sit and move according to his desire. The Lord is the original cause of the material body and the soul, which is expanded by his marginal energy.
The Supreme Lord is the dearmost object of all living entities. Prahlad Maharaj advised his class friends, the sons of demons, to take shelter of the Supreme Personality of Godhead again. So he is the most dear. Why? Prabhupada explained someplace else. We, just like a father loves his children. Why? Not because of this body. In any case, it's the body. But the body is dear to the father because the soul is there inside the body. Once the soul is gone, the body is not at all dear. So finally, or in one sense we can say, because the soul is, because of the presence of the soul, the body is dear. And soul is part and parcel of Krishna. So ultimately the dearest is Krishna. And every part and parcel of Krishna is, excuse me, part and parcel of Krishna is dear. And that's why the body becomes dear. So ultimately, all our love is actually directed towards Krishna. But because of our ignorance, we don't understand. We think we love this body or we love these material things. But no, actually the love is for Krishna, but we don't understand. So that's all we have to do as spiritual persons. We have to remove this layer of ignorance and come to the real understanding. So I'll stop here, see anybody has any questions or comments. Hare Krishna, Prabhuji, Danu Pranam. Hare Krishna, Danu. Again, very nice class, Prabhuji. Thank you very much for all the Thank you. information. Prabhuji, sometimes irrespective of doing all our hard work, we don't see the results. That means definitely we have attitude from our work. That is why we get demoralized as well. So it's not to have any negative thoughts in the mind. What should be our attitude? As a neophyte or starting devotees, we should understand, if Krishna is not giving me the results when I want, there's something better Krishna has planned. Or maybe that result was not really in favor of me, that's why he is holding it. So it's up to Krishna, and he knows much better than I do. Yes, we not give up. We continue doing our activities. Have to keep in mind. I'm losing you. Yeah, this is better. Yes, Prabhuji. So I said, so we should not give up our duties. We should still perform our duties, but we should not keep that attitude in the mind, negative attitude. So the way you mentioned, we should always have that feeling that Krishna knows everything better, but I should still perform my duty. I should not give up. That is what I should do, right? Yeah. Thank you so much for Krishna. Okay. Thank you. Shashi Mohan Prabhu, you have a question or comment? Hare Krishna, Prabhuji, Dandvat Pranam. Hare Krishna. Yeah, Prabhuji, my question, can I ask in Hindi? Sure, yeah, बिल्कुल. Okay. तो प्रभुजी मैं बड़ा ही दुविधा पूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे
तो दुविधा ये है कि पता नहीं क्यों हमेशा जो मैं है, जो अंदर बैठी हुई है, वो ये चाहती है कि मेरी प्रेज हो, मुझे कोई पूछे और मुझे ही पूछे और किसी को ना पूछे, किसी और को पूछे तो मुझे जलन हो। ये दुविधा कैसे हटाई जा सकती है? मैं कई बारी सोचता हूँ कि ऐसा क्यों है? जबकि मैं चाहता हूँ कि कोई ग्रो करे, मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिलके काम करें, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी ही प्रेज़ हो, मैं ही ग्रो करूँ, मैं ही मतलब हिडनली कहीं न कहीं वो जो मैं वाली बात है कि मुझे ही पूछा जाए, मुझे ही प्रेज़ किया जाए, मैं ही सब सर्वोपरि रहूं, तो ये ऐसा क्यों है? मतलब इसको हटाने का रास्ता क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। प्रभु से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रभु मुझे ये वाली जो बीमारी है इससे दूर करें। कोरोना तो दूर की बात है, पहले तो ये बीमारी से दूर करें मुझे ये बीमारी नहीं पालनी अपने अंदर। तो बट मैं फिर भी दुविधा में हूँ कि इसको नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों। एक्चुअली क्या है कि हम सब भगवान के अंश हैं, ये तो पक्की बात है। अब भगवान कहते हैं, हर जगह ही कहते हैं ना, मेरा नाम जपो, मेरा नाम लो, मुझे प्रेज करो, मुझे ग्लोरीफाई करो। क्यों करो? वो हमारे लिए अच्छा है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे लिए अच्छा है। पर क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो ये टेंडेंसी उन्हीं से हमें भी आती है। हम कहते हैं मेरा नाम लो, मेरे को प्रेज करो, मेरे को ग्लोरीफाई करो। पर यही चीज हटानी है कि हमें अपनी ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहिए, भगवान की ग्लोरिफिकेशन चाहिए। यही चीज पीछे एक बच्ची का वीडियो भी मैंने शेयर किया था शायद उस पे, व्हाट्सएप ग्रुप के में। और बच्ची कह रही थी ये दंभ दर्प अभिमान ये सब मेरे में है। और वो उसने बताया कि जैसे वो श्लोक याद करके गई थी क्लास में, भगवत गीता का श्लोक, और वो जूम क्लास चल रही थी, और 6 साल की बच्ची है, ज्यादा बड़ी भी नहीं। तो टीचर ने पूछा किस किस को याद है, तो सबने हाथ उठाया। तो टीचर ने किसी और को बोला, ओके यू रिसाइट, तो उसने रिसाइट किया। फिर इसका भी हाथ उठा हुआ था, पर टीचर ने फिर किसी और को बोला कि यू रिसाइट, उसने रिसाइट कर दिया। तो ये बच्ची कहती मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने वो एग्जिट कर दी क्लास, लेफ्ट इट। क्यों? क्योंकि मेरी फीलिंग हर्ट हुई थी कि मेरे को आता था और टीचर ने मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं दी। पर इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भगवान सब कुछ गाइड कर रहे हैं, हाँ डायरेक्ट तो भगवान कर रहे हैं, हमारे हिस्से में जितनी भी वो ग्लोरिफिकेशन लिखी है वो आएगी, अपने आप आ जाएगी। और अगर भगवान नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं हमें रोक रहे हैं ताकि हम वो दंभ ना आ जाए। ये है ना श्लोक, दंभो दर्प अभिमान, प्राइड ना आ जाए हम पे, एरोगेंस ना आ जाए। क्योंकि वो प्राइड और एरोगेंस हमारी भक्ति के लिए बहुत खराब है। और कृष्ण ऐसे ऐसे काम करेंगे, या कृष्ण की माया ऐसे ऐसे काम करेगी कि हमारे जो एरोगेंस है ना, ये प्राइड है, ऐसे शैटर करेगी, ऐसे तोड़ देगी, क्योंकि वो हमारी भक्ति के लिए बहुत खराब है। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन और हनुमान जी मिले। तो हनुमान जी तो कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छे धनुर्धर हो, पर भगवान राम सबसे अच्छे धनुर्धर थे, क्योंकि वो तो भगवान राम के भक्त हैं। तो अर्जुन ने कहा नहीं हनुमान जी, ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि देखो अगर भगवान राम इतने अच्छे धनुर्धर होते तो वो समुद्र पे तो पुल जो अपने तीरों से बांध देते थे। वो पत्थरों की क्या जरूरत थी, इतने सारे बंदरों को लगाने की क्या जरूरत थी? समुद्र पे पुल बांधना कोई बड़ी बात तो है नहीं, अपने तीरों से बांध देते। तो हनुमान जी ने कहा नहीं अर्जुन, तुम समझते नहीं हो, इतनी बड़ी सेना थी बंदरों की, वो पुल ढह जाता।
अर्जुन ने कहा, हनुमान जी ये नदी बह रही है, नदी देख रहे हो ना, तो मैं इस पे पुल बांधता हूं अपने तीरों से, और आप उस पे चल के दिखाना, और पुल अगर टूट गया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। और हनुमान जी ने भी कहा ठीक है, अगर पुल नहीं टूटा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। ठीक है। तो अर्जुन ने, जैसे वो तो थे ही इतने बड़े धनुर्धर, तो उन्होंने तीरों से पुल बना दिया नदी के ऊपर, और हनुमान जी से कहा आप चलो, जाओ दूसरी तरफ जाओ और वापस आओ। तो हनुमान जी ने कहा जय श्री राम कह के चढ़े पुल के ऊपर, और पहला ही पैर रखा पुल टूट गया। हनुमान जी वापस आ गए, देख लो अर्जुन, मैंने बोला था ना नहीं बांध सकते हो, मेरा ही वेट नहीं सह सका ये पुल, तो वहां तो करोड़ों करोड़ों बंदर थे। तो अर्जुन ने कहा कि, अर्जुन बहुत निराश हो गए, तो उन्होंने कहा तो ठीक है भाई, अब मेरे को अगली समाधि लेनी पड़ेगी। तो चिता बना रहे थे, तभी वहां से बूढ़ा ब्राह्मण निकला। तो उसने पूछा कि क्या हो रहा है। तो इसने, अर्जुन ने बताया कि इस तरह हमारी शर्त लगी थी, तो मैं शर्त हार गया हूँ, तो मैं अग्नि समाधि ले रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई तुम्हारी शर्त का कोई साक्षी था क्या। बोले साक्षी तो कोई नहीं था, हम दोनों के बीच में लगी थी, मेरे और हनुमान जी के बीच में, तो भाई मैंने मान ली हार अपनी। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, कोई साक्षी तो होना चाहिए ना, तो मैं साक्षी बन, तुम फिर से शर्त लगाओ, फिर से बनाओ पुल। तो अर्जुन ने इस पर फिर से पुल बनाया भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए, और हनुमान जी इस पर पूरे कॉन्फिडेंट थे कि पिछली बार एक पैर रखते टूट गया, तो इस बार भी टूट जाना। तो चढ़ गए पुल के ऊपर, कुछ भी नहीं हुआ पुल को। वो गए, पूरा पुल क्रॉस किया, वापस आए, कुछ भी नहीं हुआ, एक एक बाण नहीं हिला अपनी जगह से। तब तो बड़े दुविधा में। अब तो हनुमान जी बोले मेरे को समाधि लेनी पड़ेगी, अग्नि समाधि। तो ब्राह्मण बोले कि नहीं नहीं नहीं, रुको, तुम दोनों गलती कर रहे हो। पहली बार जब अर्जुन ने पुल बांधा तो उसको अपनी धनुष विद्या पर ज्यादा विश्वास था, और हनुमान जी आपने जब पुल पे चढ़े तो आपको राम के नाम पे विश्वास था, और राम का नाम जैसे लिया पुल टूट गया। तो दूसरी बार जब अर्जुन ने पुल बांधा, वो कृष्ण के चरणों का ध्यान कर रहा था, कृष्ण का नाम ले रहा था, इसलिए पुल में शक्ति थी। और दूसरी बार हनुमान जी जब आप चढ़े तो आप पूरे कॉन्फिडेंट थे कि टूट ही जाएगा, तो आपने राम का नाम ही नहीं लिया। तो असली शक्ति भगवान के नाम में है, हमारी हमारी बॉडी में नहीं है। ना अर्जुन की धनुर्विद्या में थी, ना हनुमान जी की शरीर में। तो बूढ़े ब्राह्मण भगवान स्वयं कृष्ण थे, तो परीक्षा लेने आए थे। तो मेन बात ये है कि प्राइड किस बात का, मुझे अपनी ग्लोरिफिकेशन क्यों चाहिए, मेरे अंदर है क्या। 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, ये मेरी असलियत है। हम क्या कर भी क्या सकते हैं, जब तक भगवान की कृपा ना हो कुछ भी नहीं कर सकते। हरे तो कृष्ण प्रभु इसलिए जी। प्रभु इसलिए जी, अपनी ग्लोरिफिकेशन की बात पर छोड़ो। ये दुविधा हटती नहीं ना, ये दुविधा को हटाने का रास्ता क्या है, ये दुविधा से निकलने का रास्ता क्या है, इसको कैसे बीमारी को खत्म किया भक्ति, जाए। भक्ति, भक्ति, और ये प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना, इसमें सारा क्लियर होता जाएगा। क्योंकि ये दुविधा, ये इच्छा जो है मेरी मेरी ग्लोरिफिकेशन हो, ये नॉलेज से ही जाएगी। जब हम अपने आप को समझेंगे हम हैं क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अर्जुन कुछ नहीं था, हनुमान जी कुछ नहीं है भगवान के आगे, तो हम क्या, हमारी क्या बिसात है। तो ये नॉलेज, नॉलेज चाहिए। और एज यू सेड, कम से कम आप ये रियलाइज तो कर रहे हैं कि मेरे अंदर इच्छा है, लोग तो नहीं रियलाइज करते हैं। तो ये रियलाइजेशन ही कि खराब इच्छा है, पर ये दैट्स गुड, तभी तो हटा पाएंगे उसको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, इज इट ओके। प्रभु जी, छोटा सा रियलाइजेशन इसमें ऐड करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। आप बहुत अच्छी बात बोली प्रभु जी लास्ट में, कि भक्ति और
श्रीला प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ने से ही वी कैन ग्रो इन दिस अमन, हमारा जो इंक्लाइनेशन होगा टुवर्ड्स भक्ति होगा, हम बहुत ज्यादा हम्बल बनेंगे। ये मेरा सेल्फ रियलाइजेशन है प्रभु जी की देयर वाज अ टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स नॉट द सेम टाइम राइट नाउ। 2018 2019 में थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइनेशन मेरा बढ़ गया था। आई वाज रीडिंग द बुक्स, आई वाज चैंटिंग मोर दैट टाइम, और हम्बलनेस अंदर से आ जाती है। अभी अब व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट फील्ड, जो शशि प्रभु जैसे बता रहे हैं, तो क्या होता है यूजुअली यू डोंट फील लाइक टू बी इन द कंपटीशन बट यू आर इन कंपटीशन। तो आपकी कोई अच्छी, हर किसी व्यक्ति के अंदर एक स्पेशलिटी है, जैसे मेरे अंदर हो या शशि प्रभु जी के अंदर कुछ एक हो, बट हम उसको फोकस कर लेते हैं एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट वी स्टार्ट शोइंग कि हम वी हैव समथिंग बेटर देन दैट पर्सन। शशि प्रभु जी से कुछ मेरे पास बेटर है और आई एम सुप्रीम, आई एम बेटर। ये होते होते प्रभु जी ऐसे एक स्टेज में आ जाते हैं कि वी रियलाइज कि भाई हम कंपेयर करने लगते हैं कि आई एम मच बेटर, आई एम दिस एंड दैट। तो वहाँ पे मैं आते आते वो बहुत हाइटेन लेवल पे कंपटीशन पहुंच जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम पूरी तरह भूल जाते हैं भक्ति को और अपने चीजों को। तो ये रियलाइजेशन था प्रभु जी, जैसे जैसे मैंने चैंटिंग कम की, जैसे जैसे मैंने बुक्स कम पढ़ना शुरू की, वापस उसमें उस केव में घुसना शुरू कर दिया, वेयर आई कैन स्टार्ट कॉम्पिटिंग विद द अदर पर्सन, माय कलीग और सब। तो इसका बस एक ही शशि प्रभु जी, आई वुड से द ओनली थिंग दैट्स माय रियलाइजेशन कि जितना मैं पढ़ूंगा, जितना मैं भक्ति में जाऊंगा, उतना हम्बल बनूंगा और उन चीजों को इग्नोर करते हुए दूर बढ़ूंगा। कि भाई साहब आप या मैडम आप ज्यादा बड़े हो, आपकी क्वालिटीज मुझसे अच्छी है, मैं कुछ नहीं है, आई एम जस्ट नेग्लेक्टेबल, नथिंग देयर, मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो जो प्रभु जी ने अभी एक चीज बताया ना कि क्या समथिंग से 1/, समथिंग अंश भी नहीं है, टिप ऑफ द हेयर, तो ऐसा आ जाएगा वो फील। और वहां पे मे बी यू आर मोर इमोशनल टुवर्ड्स कृष्णा, जैसे कि कृष्णा अब तो मेरे को कुछ आप कृपा कर दो अपनी, अब तो मैं बहुत हम्बल हो गया हूँ, मुझे अपनी शरण में दे दो, ले लो ऐसा कुछ। आई थिंक दैट विल ओनली कम मोर एंड मोर चैरिटी। या और ऑफिस एनवायरनमेंट में जो कंपटीशन होता है, तो हमें लगता है ना कि हमारी प्रमोशन नहीं होगी, किसी और टीम मेंबर की हो जाएगी अगर मेरा नाम नहीं आया। तो प्रमोशन इज इन द हैंड्स ऑफ कृष्णा। प्रमोशन तो भगवान के हाथ में ना, मैनेजर के हाथ में थोड़ी है। अभी तो पढ़ा ना, कर्मण्यवादी का रस्ते, हमारा काम अपना काम कर, रिजल्ट तो भगवान के हाथ में। तो टेंशन ना लें, चिंता ना करें, करेंगे सारे भगवान ही, ठाकुर जी सब करेंगे। एंजॉय करिए लाइफ को, भक्ति को, दैट्स ऑल। हरे कृष्णा विनय हरे प्रभु जी and Vidur प्रभु जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। ये मेरे लिए थोड़ा बहुत मुझे हेल्प करेगा इस बीमारी से निकलने के लिए। हालांकि मैं कोशिश बहुत करता हूँ कि इस पर्टिकुलर रास्ते पे मैं ना चलूं और ना ही इस रास्ते की तरफ देखूं कि ये रास्ता, बिकॉज ये रास्ता मुझे चलना ही नहीं है। इस रास्ते पे मेरा कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। बट पता नहीं क्यों ना चाह के भी कदम उस तरफ को क्यों बढ़ता है। चाहता नहीं है बट फिर भी बढ़ जाता है कि वो कहीं ना कहीं जो मैं बैठा हुआ है वो कहती है कि नहीं तू कंपटीशन कर, नहीं तू चल इस पे, तू क्यों पीछे हट रहा है, तुझे जवाब देना है तुझे प्रूव करना है। or but the story which you told to me, this will inspire me for going to the right direction. और प्रभु जी एक चीज और ऐड करूंगा, एक और चीज ऐड करूंगा। अगर आप दिल्ली में हैं या समवेयर वेरी क्लोज टू इस्कॉन टेम्पल, तो भजन संध्या में जो 4 बजे होता है, आई थिंक यू शुड जॉइन दैट। तो वहाँ जो गैदरिंग होती है ना प्रभु जी, विद ऑल मृदंग एंड हारमोनियम, आई जस्ट लव्ड इट सो मच। मुझे बहुत पसंद था, मैं पर्सनली जाता था 15 डेज 20 डेज से एक बार। वो जो वाइब मिलती है ना, एनर्जी मिलती है, दैट इज डिफरेंट। और जो गैदरिंग मिलती है, आपको लगेगा कि मैं कॉर्पोरेट में बैठा हूँ, ये सोच रहा हूँ और ये क्या है, ये बिल्कुल अलग लाइफ। तो दैट्स एडिशनल।
चैंटिंग, भजन कीर्तन एंड जो कभी बताते रहते हैं, श्रवणम कीर्तनम एंड भजन। उसका तो मजा ही अलग है। यस, पिछली काशी में मैं वहाँ था और मैंने वो आनंद लिया और मैंने वो आनंद मेरी जिंदगी में आई थिंक मैंने पहले कभी नहीं लिया और प्रभु ने भी मुझे कुछ स्पेशल ही आशीर्वाद दिया जो कि मैंने मतलब वो अनुभव मैं लाइफ में मुझे नहीं हुआ जो मैंने पिछली काशी में, निर्जला काशी में, इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में जाके लिया। तो आप आज भी जाओ, आज भी एकादशी है। हाँ जी कोशिश प्रभु करो जी। अगर जा सकते हो तो। हाँ जी प्रभु जी। और बाकी अपना भजन करिए, बाकी सब चीजें एक्चुअली बेकार है। कोई फायदा है नहीं। Moshimata, you have a question, comment? Sorry, Prabhuji. This has got raised by default. क्या चीज? Okay, I guess we can stop here. You all have a safe and wonderful day. Hare Krishna. Jai Shri.